Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching Greenwich Live Sessions. This is your host Umar Khan, and I'm back with another show, another guest. And yet again, I'm super excited for today's show because the guest I'm about to introduce, he has a deep bond when it comes to Greenwich University. उस्तादों के उस्ताद हैं, मेरे भी उस्ताद रहे हैं when I did my masters from Greenwich University. और कहाँ के उस्ताद नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं आज Sir Aqeel Ahmed, who has done his Masters of Science in Computer Sciences. He's a gold medalist and a proud Greenwich faculty member, and we are proud that I was in one of his classes. जबकि जो multiple colleges हैं जहाँ पे वो अभी भी पढ़ा रहे हैं, जिसमें कुछ नाम अगर मैं लूँ तो उनमें बीकन हाउस आता है, उनमें रेडन कॉलेज आता है, वेल्स कॉलेज आता है, तफसाल, HBGS, FGS और इतनी इनकी अचीवमेंट्स ओवर द इयर्स जो मैं शायद इंट्रो में कवर भी ना कर सकूं, लेकिन हम शो में बात करेंगे. सो वेलकम टू द शो सर, होप यू डूइंग वेल. Thank you very much. Assalamu alaikum, Umar. Assalamu alaikum, everyone who watching me. Thank you very much for inviting me here. वालेकुम सलाम एंड सर, इट्स अ कंप्लीट ऑनर कि आज आपने वक्त निकाला, आप इस शो का पार्ट बने, बिकॉज आपसे जो एक बॉन्ड है वो इतना डीप जाता है, इतना पुराना जाता है कि मैं पर्सनली बड़ा एक्साइटेड हूँ आज के शो को लेके, बिकॉज वी हैव गॉट सो मच टू टॉक अबाउट. Greenwich is like my second home, as you know that. I mean, I've been working for so long. So I'm very thankful to Madam Seema Mughal. And there are many other people who I like to say thank you, including Madam Seema Mughal. She gave me an opportunity to work there. Saeed Mughal Saab, as you know that, who has been a boss and a friend and a good friend though. True. And Michael Gladel, Colonel Fazuddin, Shamir Lakhani was my right hand right from the beginning till now. And there are many other people who were, associated with Greenwich University, and then I enjoyed every bit of time that I've spent there. इंडीड. और सर एक ग्रेनिच में 2000 में बैकलॉरिएट भी एक स्टार्ट हुई थी जो मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स इंटर की जगह कर सकते थे, तो उसमें भी आपका एक बड़ा क्रूशल रोल था. अगर वो आप शेयर करना चाहें कि क्या एक्सपीरियंस था एंड हाउ इट केम अप. I have to share a story with you. Remember the two genius people at Greenwich University, Michael Gladel and Colonel Fazuddin, who were the program directors there. या. And people who have met Colonel Faizuddin, they know that how intelligent he was and how calm and quiet he was at times. With me, he was very quiet. With the student, he was very strict. That's what I heard. So ऐसा होता था कि like ऊपर बैठे मैं फर्स्ट फ्लोर पे अपने रूम में और वो फोन करते हैं, हेलो भैया अकील, could you please come to my room? अब मैं जा रहा हूँ बातचीत कर रहा हूँ, यार भैया अकील, I got stuck in this, could you please teach me this technique and that technique? And same was the case with Michael Gladel also. He used to call me for help at different times. So they both have computer system in their room, but they had difficulty in using it. So I'm talking about back in 90s. Keep that in mind when computer was was not that common. Applications were not common, and method and procedure were slightly different, complicated. So I या. used to teach these two people time to time. And one day they both came to my room and they were like, "Hello, Akil, bhaiya, why don't you start thinking or teaching this computer science?" And I was like, "No, I don't think I can be a teacher." They're like, "No, we are pretty old. We are like 70 years, and they were 60, above 60 or 70 years old. So you have taught us, and we have learned from you. So as you can be a teacher of these old people, so why not you start teaching our new program, baccalaureate, and you start you start working on it, and you start designing the curriculum and all that." या. So that was the time I got an opportunity. I was back in 1996. Officially, I started my teaching career at Greenwich University, and it was all designed by me. First module is I still remember the name of the students who were there in my first class of baccalaureate. वाओ. So, in fact, your brother and sister were there, Ahmad and Iram, and then Javeria, and then Chanda. All these people, if they're watching me, they must be shocked that I still remember their name, and then Mavish, and then Faraz and Sami. So, I think that Greenwich has given me so much that if I'll start sharing the stories with you, we need ages to discuss things. Yeah, but at least we have time, and I'm looking forward to lots of stories and memories for today. But sir, as we all know, we're stuck in this whole COVID situation. So, how has life and work affected you, and how have you adapted accordingly?
Yeah, initially it was a problem because I worked at different places. So for me, it was a problem that every single school was using different apps and different software. Some are using their own customized app. So a teacher who's a computer science teacher, it wouldn't be a problem for him. But Hmm. all those who are, teachers of different fields and they're associated with the school and they're working as a part-time teacher there, and they had so many difficulties. So thanks to the tools available these days, so biggest problem was to assess a student and get their evidences of assignments and tests because this year we didn't have Cambridge examination, as you all know that, and the option was that we all had that to submit the document and keep these evidences with us. So it was a new technology, use of the new tools and apps that were available, and we have technological revolution in our surrounding. Everybody who was not connected now is connected. So people can't live without it. I mean, they have to be associated with the technology if they want to be in the market, if they want to stay in the market. और मैं इनमें एक बात कहूँगा कि ये तो आज कोविड की सिचुएशन है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिए ये सारी चीज़ें जो है ये कंपलसरी हो गई हैं, लेकिन अगर कोविड 19 ये प्रॉब्लम ना भी होती, so जी, say in 2025 I think onwards हमें ये स्टार्ट करना ही था सब कुछ, true. ये सब And ऑनलाइन हो जाना ही था, एंड in दैट a way, टाइम वुड कम। या या इन अ इन वे द blessing in disguise रही। और जहां आपने एक बड़ी अच्छी बात की, व्यू बीइंग अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, there are lots of people who are very reluctant coming towards technology and completely shifting towards, although because of this covid everyone's forced to, but then again we are facing challenges with many teachers and students of having issues के वो उस चीज में अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा एक बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज ये आता है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं घर पे, बच्चे मतलब एक घर में 3-4 बच्चे हैं, डिवाइसेस का एक प्रॉब्लम आ जाता है और इस तरह से कुछ इश्यूज हैं। सो आपसे हम सोल्यूशंस की भी बात करेंगे, बिकॉज आप ने हमेशा हर चीज के पूरे प्लान्स बनाए, डिजाइन बनाए। तो आज इस सिचुएशन में विल टेक एडवांटेज ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 2 डेकेड्स है कि हम इस कंप्यूटर की दुनिया के अंदर जो हम एक फोर्सफुली कोविड की तरफ आ गए, एंड थिंग्स विल मूव ऑन दिस वे इन द फ्यूचर एज वेल। तो आपके एक्सपीरियंस में हम आपसे सोल्यूशन भी लेंगे जो अभी अर्ली हिकअप्स और चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम उनको बेहतरी की तरफ किस तरह से ला सकते why not, you're most welcome. You see, you tell me to design a new software or design a new app, that's not difficult, but you tell the people to go for a change, convince people to go for a change is rather more difficult. हैं? राइट। Change is not easily accepted. So when this change came up, uh, most of the parents didn't realize that we are switching from this manual system to the new computerized system, and then this teaching can be continued using these devices and all that. So some had problem of understanding, or maybe there was computer literacy involved in it. But the major problem was faced by the teachers of the Montessori level, or the primary level teachers, and the student, like the student who had difficulty in holding the pencil. How would you teach them how to hold a pencil? So राइट। teacher maybe can sit in front of the computer, can pass the gesture, and can advise a student to do things. Different activities can be taken place, or maybe videos can be shared so that student can watch them. Yeah, the challenges are there, and people now have learned a lot. Now have learned a lot. In that case, टोटली। yeah, most of the schools are having continuous training sessions. I personally have been trained many people at Greenwich and outside Greenwich also. So wherever people needed my help, I'm always there. And then during this time, I can't tell you the number of people called me and they wanted to learn Google Classroom, and they wanted to uh, talk about the restricted features of Zoom, because a student who is creating interruption during your lectures, and making the lines on the screen. So I personally take all these things positively. A student is not a kind of a machine. That it is in human nature that you interact with the people, and whatever they can think, whatever they want to do, they'll do it.
and you got to control them, you got to monitor them. That's your quality, that's the quality of the teacher. So I never blame the student if they are, creating interruptions. I think that every single teacher should know how to take place in their heart. Absolutely, totally agreed with that. And one thing I'd like to add on over here is because where we've switched towards this online classes and now everyone's adapted to it quite brilliantly, especially if I talk about Greenwich, how they've successfully run their semester very smoothly with all the exams, and now we're moving towards the next semester. At the same time, when we move towards the online methods, you mentioned being in class and physically, the physical presence matters a lot. But moving to online, there's also a must change in the methods of teaching as well. Because what you can teach in a way physically, being one-on-one right in front with the student, you have to change the methods when it comes to online, like maybe some online activities to keep people engaged and get their interest right in the class. Absolutely right. Absolutely. In fact, the teachers are putting in double effort. I mean, they have to deliver their lecture, and after that, right after their lecture, they have to upload the videos to a particular folder, which is a shared folder, and class mates can get that copy of the video. So this way, the work has become doubled. That you have to, deliver the lecture, and then you have to upload the videos, and you're working at many places. So you can imagine that before you go for sleep, you have 10, 12 videos to upload, and sometimes you have to make modifications also, and then arrange the notes for them. Keep your notes ready. Keep your assignments ready. You have to give them work. You have to give them quizzes. You have to take their test also. Check them online, which was the biggest challenge to check those test paper, because most of the schools are using MCQs based testing systems, so that's fine. But what about the structure type of question? How will you check them? So we had to practice different tools through which we can, mark these papers and all. So yes, we have to arrange the notes, presentations, and keep them ready for the students. And I think it's a kind of advantage for the student also if they have missed a lecture, so they can always refer to that shared folder, and वो बड़े रिलैक्स भी हो गए. उनको पता है कि यार अब जो है वो सर ने वीडियो डालनी है या टीचर ने हमारी वीडियो डालनी है. So they are not very prompt in the coming on time. तो वो कहते हैं चलो कौन देखता है, चलो बाद में वीडियोस देख लेंगे, वॉच कर लेंगे. Let's watch the video later on. So थोड़ा रिलैक्सिंग मूड में आ गए. नहीं, एक बात आपकी और सारे बड़ी कि जहाँ देखें बच्चे और होते हैं जरा शरारती, उनको शरारत भी करनी होती है, मस्ती भी करनी होती है, डिस्टर्बेंस भी करनी होती है. लेकिन अब जब आपका टीचर इतना कंप्यूटर का एक्सपर्ट हो और वो सारी हैक्स ट्रिक्स सब जानते हैं, तो एज ए टीचर के सामने उनको ट्रिक करना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है. जैसे हमने देखा बहुत से लोगों ने एक रेडीमेड अपनी वीडियो थोड़ी एक बना के सामने लगा देते हैं कि जी हम क्लास के अंदर मौजूद हैं, और हमने बेतहाशा चीजें देखी कि जिससे बच्चे ना थोड़ी सी चालाकियां करते हैं. आप चालाकियां देर एंड देन पकड़ लेते हैं. तो इस तरह का Yeah, कोई वाक्य अगर आपके साथ हुआ हो तो हमारे साथ शेयर करें. ऐसा होता था कि क्लास में एक बच्चा था, तो वो जैसे ही क्लास में मैं जाके बैठूं तो वो कहता है सर मैं गो टू वॉशरूम. क्या भाई चले जाओ वॉशरूम. फिर वॉशरूम से वापस ही नहीं आता है. फिर हाँ. क्लास हो, फिर सर मैं आई गो टू वॉशरूम. चले जाओ, उसको कैसे रोक सकते हैं? समथिंग नेचुरल, यू कैन स्टॉप हिम. लेकिन मैं रिकॉर्ड जरूर करता अपने पास कि व्हाट टाइम ही वेंट टू द वॉशरूम एंड व्हाट टाइम ही केम बैक और डिडंट कम बैक, डिडंट टर्न अप क्लास. फिर होती है एक दफा पीटीएम. अब जब पीटीएम होती है तो उसके अब्बा कहते हैं मेरे बच्चे की रिपोर्ट है. मैंने कहा मैं आपके बच्चे की ऐसी रिपोर्ट देने वाला हूँ, you'll be surprised to see that. मैं तो ये भी बताने वाला हूँ how many hours he has spent in the washroom. क्या बात तो है. वो जब मैंने उनको बताना शुरू करा, मैंने कहा आई थिंक ही शुड सी अ डॉक्टर. तो ये तो क्लास में आते उसको आते ही बैठते जाना पड़ा. वो दिन था उस पीटीएम के बाद, वो उसको मैंने तकरीबन आगे कोई 2 साल पढ़ाया होगा. वो ही वॉज द फर्स्ट वन टू बी देयर बिफोर आई रीच टू हिज क्लास. तो वो आपको अटेंडेंसेस तो लेना होता है बिफोर द क्लास, आफ्टर द क्लास, एंड इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं. आई मीन दैट्स द पार्ट ऑफ द जॉब, बट यू डू इट ऑनेस्टली, गिव रिस्पेक्ट टू गेट द रिस्पेक्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑल द टाइम यू आर टेकिंग आउट योर एंगर. वो होना भी नहीं चाहिए. मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जिस जमाने में रसूल अल्लाह आए थे, तो सऊदी अरब में जिस कौम में आए थे वो इतनी सख्त थी और इतने रास्ते से हटे हुए थे, दे वर ऑफ द ट्रैक कंप्लीटली. तो उनके लिए भी वो कह सकते थे कि बड़े इनडिसिप्लिन लोग हैं, छोड़े जी, अल्लाह का पैगाम इनको नहीं दिया जा सकता. मगर उन्होंने दिया और आज पूरी दुनिया में इस्लाम जो है बड़ी तेजी से फैल रहा है.
वो कर सकते हैं तो एक इंडिविजुअल क्यों नहीं कर सकता है? I mean, हमारे पास स्ट्रेंथ क्या होती है क्लास में? मैं अगर मैक्सिमम बात करूं, strength that I've taught at Greenwich. So yeah, there was a day when 118 students were together in room H. It was the first class of the semester. All the sections were merged, and Rashid said, "I cannot divide these students in a group. Today you have to, go with the whole lot and you teach them." It was very difficult because you are shouting, you're very loud while delivering the lecture, and you make sure that your voice reached till the end of the class. So yes, I had that experience too. तो आप ये कर रहे होते हैं क्योंकि स्टिल ये वो लॉट तो नहीं है जो बाकी और दूसरे लोगों को मिली होती है, जैसे प्रॉफिट्स की बात करें तो उन लोगों ने तो बिगड़ों का हम लोग के पास तो आप थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बात करें, एंड आई थिंक everyone has that understanding in his mind that would definitely turn back to the right मैं path. बिल्कुल सेकंड करूंगा क्योंकि मेरा खुद आपसे पढ़ने का एक्सपीरियंस रहा। खैर एक स्टूडेंट तो आपके रहे, लेकिन आपसे जो ताल्लुक है वो और बड़ा गहरा है, और एक मोहब्बत भी बड़ी गहरी है। लेकिन जो मेरा पर्सनली एज ए उस्ताद और स्टूडेंट आपके साथ रहा था, इट वाज ऑलवेज वेरी फ्रेंडली, ऑलवेज गाइडिंग थ्रू। मैं एक और वाकया भी शेयर करूंगा अपने प्रैक्टिकल का लेटर ऑन, लेकिन फिलहाल कमेंट्स हमारे साथ शामिल है लोगों के, सो लेट्स सी कौन कौन है। बतूल फातिमा हमारे साथ हैं, कहती हैं बेस्ट कंप्यूटर टीचर। तो आपने इनको भी कंप्यूटर चलाने की टिप्स दी थी? Batul, Miss Batul. Miss Batul, the one who sits in examination hall. Maybe yes, whenever I used to go there. So if anyone needed any help, वहाँ पे डायरेक्टर एग्जामिनेशन जो होते थे हारून साहब, जी उनको बड़ा बहुत वक्त ऐसा होता था कि मैडम तो बड़ी एक्यूरेसी मांगती थी काम में। मैडम थी वहाँ, if you, I mean, you're working with her, so you know that what kind of accuracy she wants in your work. And बिल्कुल no compromise on that, no compromise on that. तो वो पता लगा जी हारून साहब को कोई टास्क मिला या मुझे कोई टास्क मिला, वो रात के किसी हिस्से में फोन आया, अब हारून साहब यार बेटा डू समथिंग, मुझे ये करना है कि I have to make a program and I have to change your orientation of the names and I have to print out this report, guide me what to do. और मैंने उनको बना कर दे दिए, वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, उनको बना दिया। तो वो इस तरह की हेल्प सभी को किया। आई एम श्योर कि राशिद, जमील, कामरान, जितने भी एग्जामिनेशन में छोटे बड़े सब लोग who ever needed my help, I was there to help them. एब्सोल्युटली। I'll add on some more comments। हमारे साथ हमना चौधरी मौजूद है, कहती हैं वेरी नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सर अकील। कुछ Same here. आप सारे बच्चों को याद रखते हैं तो आपको ये हमना चौधरी तो मैं इसकी अगर बात करूं तो ये बड़ी बड़ी काम एंड क्वाइट काम किस्म की बच्ची, वो आगे आके बैठना और अपना काम टाइम पे करना। आई डोंट रिमेम्बर एनी particular incident when she ever missed a deadline of assignments or any kind of project work. She was very prompt in submitting all her assignments on time. So बड़े अच्छे स्टूडेंट्स मिले, बड़े डिसिप्लिन स्टूडेंट्स मिले वहाँ पे। टीम दिल्ली हमारे साथ मौजूद है, एक और ग्रेनिच के प्राउड अलमनस, और हमारे सेशंस पे भी इनका पार्ट रहा था। कहते हैं रियली गुड टू सी सर अकील अहमद, माय बेस्ट विशेस टू हिम। सो करीम दिल्ली के साथ कोई मेमोरी? करीम तेली के साथ या MIS का हुआ, फिर उसके बाद IT इन बिजनेस भी था, और he was a brilliant student too. He was a brilliant student. इंडीड, और उन्होंने अपनी Yeah, ब्रिलियंट करियर के पाथ में भी बिल्कुल दिखाई है, एंड मेनी स्टूडेंट्स लुक अप टू फॉर द ब्रिलियंट थिंग्स दे हैव डन। और फिर उसके जी बाद भी ग्रेनिच, या मैम ग्रेनिच में शादी भी, या जी सर ग्रेनिच के बता रहे हैं हम कुछ? ग्रेनिच में जब करीम मिलता है, जब भी आज तक भी, the best part is that people recognize you and then respect you. And Kareem is, mashallah, alhamdulillah, is very disciplined, very disciplined. मैम शाजिया अनवर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अकू, ग्लैड टू हियर यू आफ्टर सो लॉन्ग। तो वो सारे पुराने हमारी ग्रेनिच फ्रेटर्निटी आज जमा होगी, बड़ी मुलाकातें होंगी, ऑल्दो सोशल डिस्टेंसिंग पे, लेकिन इस सेशन में सबकी मुलाकातें होती है, बातें होती हैं। तो मैम शाजिया के साथ ढेर सारी मेमोरीज हैं, कुछ शेयर करना चाहें? वालेकुम अस्सलाम शाजिया। शाजिया तो बस वो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अकील आ जाओ, फला की कुरान कहानी है, उधर दुआ मांगनी है, फला ये हो जाए, वहाँ नात पढ़नी है, अकील यहाँ पे ये काम करना है। मतलब Shazia had a kind of freedom to knock and to call me out, and then she used to take me to the prayers room or whatever, जो भी कुछ एक्टिविटीज इन्होंने करानी होती है। बड़े ये खुद भी बड़ी अच्छी पोइट्री वगैरह लिखती हैं, तो वी हैव बीन शेयरिंग दैट टू। एब्सोल्युटली। संतोष अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, एक और ग्रेनिच की स्टूडेंट हैं, कहती हाँ सो फनी, दैट्स सो बैड, आई हैव सीन दिस इन माय क्लास टू। ये जो बाथरूम वाला आपने हैक बताया ना, आई थिंक सारे टीचर्स इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये सारे बच्चे जिनको बाथरूम जाते हैं ना, उन सब की शामत आएगी। अब फातिमा कहती है
हाँ जी, बाद में क्या? जी जी, आप बोले। वैसा भी हुआ कि ऐसे ही क्लास में आप बैठे हैं, एंड देयर वाज अ गर्ल, शी इज लाइक, सर आई हैव टू गो, आई हैव एन इमरजेंसी। मैंने कहा बेटा इमरजेंसी तो है, you leave your phone number here and I'll make sure that I'll tell your parents that you have an emergency and you left the class and you're leaving now. And this is the time, please write it down in time. He's like, no, sir, no emergency. बात वही है ना, जब उस्ताद बच्चों को समझ पता है अच्छे से और वो उनको वहीं से पकड़ ले तो फिर चीटिंग करना और चालाकियां करना मुश्किल हो जाता है। तो फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम, कहती है अमेजिंग गेस्ट। कुंजल अख्तर चनार एक और ब्रिलियंट ग्रेंच की स्टूडेंट, गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब ये तो स्टेज पे बप्पी लहरी बन गई थी, सारे गोल्ड मेडल। और कहती है ग्लैड टू बी स्टूडेंट। तो कुंजल इतनी माशाल्लाह ब्राइट स्टूडेंट थी, क्या मेमोरी कुंजल के साथ? So, Zul, I think I'm a teacher of the family now. आपको पढ़ाया, आपके भाई को पढ़ाया, आपकी सिस्टर को पढ़ाया। I've been teaching wife and husband also. साजिद को पढ़ाया, इरम को पढ़ाया, and then Kunzul को पढ़ाया और फहद को पढ़ाया। You can imagine the kind of memory I have that I memorize the name of my student. Both of them were brilliant. I mean, इनके भी बस कभी ऐसा हुआ कि वो असाइनमेंट्स वगैरह में किसी की अगर सिमिलैरिटी आ जाती थी तो आई नो दैट दीज आर द टू पीपल, यू नो, दे स्टे टुगेदर, दे लिव टुगेदर, दे वर्क टुगेदर, एंड इनके असाइनमेंट पहले मैच कर लो, इसमें जरूर कुछ सिमिलर मिलेगा, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आइडेंटिकल होगा। बट आई नेवर हैड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दीज स्टूडेंट्स, दे वर अमेजिंग, दे वर अमेजिंग। बात वही है ना, आपका काम ही ऐसा है, बाइनरी कोड्स में आप काम करते हैं। अब जिसको बाइनरी कोड याद हो, जिसको एमएस डॉस की सारी वो कमांड्स याद हो, तो बच्चा फिर तो कोई चांस ही नहीं ना कि ऐसे टीचर के साथ कुछ चालाकी कर सके। तो मजीद मैसेज शामिल करते हैं। हमारे साथ खुरासान अली शाह मौजूद हैं और वेलकम टू द शो। इरम भी देख रही हैं और कहती है वेलकम सर, यूर माय फेवरेट टीचर। वेल, आप अकेली नहीं है, आप बहुत से लोगों के फेवरेट टीचर रहे। Thank you very much. I'm honored that you guys have written fine words for me. Thank you very much. I mean, that's the kind of asset. कमेंट विद सारे के आपस में क्विकली कुछ नाम शामिल करूंगा बिकॉज फिर हमारी बातें भी हैं। सो सुलेमान असद हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अकील साहब, यू हैव ऑलवेज बीन एन एब्सोल्यूट फेवरेट टीचर ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड सर जी। तो सुलेमान असद भी एक बड़े ब्राइट स्टूडेंट रहे, ग्रेनिच के लाइव वायर रहे, उनके साथ कुछ मेमोरी? MIS की क्लास होती थी, and then Samir Lakhani used to handle the theory part, and I used to, you know, give them practical classes. So it was kind of rumor that, you know, Samir is kind of very tough teacher, and then he's going to give them very tough time. And then MIS course जो होता है, everyone had that fear of that course. तो ये एक लंबी सी एक क्यू होती थी लोगों की, and they used to come to me, अकील प्लीज खुदा का वास्ता कोर्स निकलवा दो। तो ये MIS वाली लॉट जो है ना, they remember that tough time they had. I tried my level best to, you know, give them, you know, help, undue help, by the way. Not, I'm talking about undue help provided to them. So मुझे I always within my own boundaries. Yeah. बिल्कुल, वो मुझे जो याद आता है, आई रिमेम्बर कि जब हमारी क्लास थी और प्रैक्टिकल पार्ट आप कराते थे, थ्योरी पार्ट सर समीर कराते थे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वी ऑल लव सर समीर एज वेल। लेकिन जो बच्चों का आपस में डिस्कशन होता था ना, वो कहता था कब प्रैक्टिकल का टाइम शुरू होगा, हम प्रैक्टिकल के लिए जाएं, वहाँ वक्त अच्छा गुजरता है। वहाँ थोड़ा, क्योंकि आप एक बड़ा प्यार मोहब्बत से सारा लेके चलते थे और एक बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट। तो मुझे याद है कि जब एग्जाम हो रहा था तो प्रैक्टिकल के अंदर मैं कहीं किसी चीज में फंस गया था, एक्सेल पे मैंने हर चीज सही लिखी लेकिन मेरा रिजल्ट टेढ़ा आ रहा था। अब मैं परेशान, मैं अपना बिल्कुल परेशान, आप दूर से देखते हुए आए मेरे पास, ये परेशान क्यों है? तो मैंने आपको बताया ये मसला है, आपने मतलब चुप रहना, चुपचाप बैठना। आपने जाके मेरा थोड़ा मसला हल किया और मैंने पूछा तो ये कहता है चुप हो जाओ और आगे देखो। तो मुझे ये चीज बड़ी याद है कि आपने मुझे हेल्प आउट किया था और फिर मैं बड़ा गिल्टी फील कर रहा था कि यार देखें इतने अच्छे से बताया लेकिन मैं कैसे रह गया। But this is some memory that we all have as students, and it's absolutely brilliant. तो सर आपकी एक जर्नी आई, बिल्कुल आपने जिक्र किया 1996 से शुरुआत हुई। So you've seen the changes in technology over the decades. Softwares में, systems में, अब smartphones आ गए हैं, softwares different आ गए हैं। कैसे देखेंगे how education has changed and especially अब सिनेरियो ही चेंज हो गया पूरा कोविड की वजह से, तो कैसे रेट करेंगे डेकेड बाय डेकेड ड्यूरिंग द 90s, ड्यूरिंग द 2000s and now the latest times?
Honestly, if I make the comparison between the applications that we have used 20 years back, so that method was much difficult and tedious method. I True. mean, I remember the complexity involved in copying the folders and copying the files on a network drive. So we had to write down a long command, words combination to perform that particular task that now you perform in Windows using few clicks. True. So applications, procedures, method have become much simpler now as you have graphical user interface, easy to use method, easy to understand method. But remember one more thing also that in computer field you need to be fully up to date. At the moment you feel relaxed and you stop studying more, so that means you're out of the market. You'll be out of the market. So you have to be fully associated with the technology. Keep learning new things. There's no end of learning the new things. Whatever the course you talk about, but in computers specifically, you have to keep yourself fully engaged. एब्सोल्युटली सर। अब तो आपका जो है ना बड़ा सीरियस मोड देख के मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तो अब जरा अच्छा. आते हैं आपकी सारी अच्छी मेमोरीज की तरफ, जो क्योंकि आप बड़े एक्टिव रहे, बड़ा पुराना साथ है आपका सारे टीचर्स के साथ, सारे स्टूडेंट्स के साथ। अब स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह सब ग्रेजुएट होके सेटल हो गए, उनके करियर बन गए, फैमिली आगे बढ़ चुकी है। तो अब जरा बात करते हैं आपकी सारी वो कलरफुल मेमोरीज की, वो सारी जो मजेदार मोमेंट्स थे। आप क्रिकेट में बड़े एक्टिव थे। ग्रीनिच के पास अपना स्टेडियम हुआ करता था जो कि अब जमजमा क्लब बन गया है। तो वहां पे भी आप जब मैचेस होते थे, टूर्नामेंट होते थे, बड़ा एक्टिव रोल करते थे, फास्ट बॉलिंग कराते थे, अटैक करते थे ग्रीनिच के लिए। कैसे वो टाइम, क्या मेमोरीज याद आती हैं जब हम बात करते हैं सारे टूर्नामेंट्स की? I remember all these staff members are the witness when they invited a team from other side, and I was the opener in that match. I was played at Delton's hockey stadium. या So जब मैं opener गया हूँ तो I started hitting the ball hard, and then it was a tape ball match of 8 overs और उसमें मैंने score किया था कोई more than 40 runs score किए थे, बहुत मारा था हाँ, और मैच हम जीत गए। तो मैं बड़ा मशहूर हो गया उस वक्त कि यार बिल्कुल। अकील की बैटिंग ऐसी है। मुनीर खान वाज देयर इन दैट टीम, कामरान वाज द कैप्टन ऑफ दैट टीम, एंड राशिद एंड जमील। उसके बाद इमरान नुमान भी थे। इमरान नुमान भी थे। उसके बाद एक बड़ा टूर्नामेंट होता है यहाँ पर डेल्टन पे, और सईद साहब ने जो है वो कहा कि जी स्टाफ की भी टीम पार्टिसिपेट करेगी एंड वी मेक श्योर कि अकील भी खेले और दूसरे लोग भी खेले। अब उस मैच में यू कैन इमेजिन द क्राउड इन दैट टूर्नामेंट, इट वाज फुल ऑफ पब्लिक। अब जब वहाँ गया खेलने के लिए एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग दैट अकील वुड कम एंड देन वुड शो हिज क्रिकेट स्किल्स, और मैं जाता हूँ और वो पहली ही बॉल पे वो एयर स्विंगर मिलता है मुझे और आई गॉट आउट ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल। तो वो सारी जो मूवमेंट थी वो सब तबाह बर्बाद हो गया था मूड उस वक्त। बाकी उसके अलावा बड़े अच्छे वो एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे क्रिकेट खेलने का। टाइम टू टाइम बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। पिकनिक्स हमारे साथ हुई, वो आप लोगों को याद होगा एक नाज सोमरो साहिबा का एक हट हुआ करता था गडाफ टाउन में। फार्म और हाउस। जब आपके साथ सईद साहब जैसे बॉसेस हों जो कि बड़े फ्रेंडली माहौल में आपके साथ रहते हैं, वी डांस टुगेदर, वी हैड फन टुगेदर, वाज कोई कोई इसमें हेजिटेशन नहीं है। आप वहाँ पे उनके साथ होते हैं तो यहाँ कामरान भी है और सुबह हम निकलते हैं वॉक पे। सो कामरान आपके साथ हो तो यू वुड एंजॉय एवरी सिंगल मोमेंट। तो एब्सोल्युटली। वहाँ पे लोगों को ले जाना और फिर उधर वो पूरा एरिया देखना, और फिर वहाँ एक स्कूल में भी गए और वो पूरा देयर वाज अ थिक लेयर ऑफ डस्ट एवरीवेयर इन दैट स्कूल, इट वाज अ स्मॉल स्कूल। तो कामरान कहता है चलो यार आज यहाँ क्लास लगाएंगे और यहाँ पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, चलो लेट्स गो इनसाइड। और वहाँ जाते हैं, वो बकायदा हमने वो पूरा जगह थोड़ी साफ वाफ की, फिर उसके बाद बोर्ड नजर भी नहीं आ रहा था, देयर वाज अ थिक लेयर ऑफ डस्ट एवरीवेयर एज आई सेड। तो उसको हमने बड़ा क्लीन किया और फिर वहां से हमने एसेसरीज उठाई और फिर उसके बाद हमने वो ढूंढा कि कहीं से हमें चौक मिल जाए और फिर पेन वगैरह मिल जाए, पेंसिल्स मिल जाए, वो दी डिस्ट्रीब्यूट की। स्टाफ मेंबर साथ थे और फिर हमने वहाँ पर एक ऑफिस हमने एक एग्जाम्पल सेट की कि वहाँ हमने पढ़ाया और वहाँ हमने जो है पढ़ा और फिर थोड़ी देर के बाद फिर हम वहाँ से निकले।
ये तो एक पिकनिक के माहौल की बात थी। बाकी कुछ चीजें ऐसी है जो ऑफ द स्क्रीन में शेयर कर सकता हूँ, तो यहाँ शेयर नहीं कर सकता आपके साथ। बिल्कुल तो बिल्कुल, जब लेकिन इसमें ये खासतौर पे पिकनिक का आपने जिक्र किया, तो वहां पे एक ट्रेंड होता था कि जो रात को सो जाता था उसको उठा के स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाता हाँ था। बिल्कुल, आई वाज वन ऑफ देम, मुझे उठा के फेंका, और उसके बाद जो मेरी पॉकेट्स में जो चीजें थी वो सारी वेस्ट हो गई थी, एंड देन आप समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो बाहर आना, और फिर सुबह के वक्त, लेकिन सही साहब ने बड़ा जबरदस्त अरेंजमेंट कराया था। आई स्टिल रिमेम्बर दैट पिकनिक। वी हैड डिलीशियस फूड एट डिनर टाइम, और फिर ब्रेकफास्ट वाज अमेजिंग, फैबुलस था, और लंच भी जबरदस्त था। वो ऐसा था कि गांव के अंदर से वो जस्ट जब जाके खड़े हुए तो आपको लगता नहीं था आप किसी गांव में जी हैं। बिल्कुल, और बड़ी बड़ी आपने ऐसी मेमोरी याद दिला दी। मैं इनफैक्ट अगर मुझे होता कि जिक्र होगा, मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी थी उन पुरानी, उसमें उसमें मैं तो बिल्कुल ही मिनिएचर था, बहुत ही छोटा था। ये बात कर रहे हैं कोई 2004 2006 की, तो आई वाज क्वाइट क्वाइट स्मॉल। अभी भी छोटा सा ही हूँ, लेकिन उस वक्त थोड़ा ज्यादा छोटा था। मतलब तुम तो वो थे कि तुम कंट्रोल में नहीं होते थे, हर वक्त तुम इधर उधर बिजी होते थे। तो मैंने खालिद साहब को पूछा, खालिद साहब वाज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन टू। मैंने उनको पूछा, यार खालिद साहब, इसको कहीं ले जाते हैं उमर को तो कैसे इसको संभालते हैं? कहते यार हम अपना खाना खा लेते हैं, हाँ हम अपना खाना वाला खाते हैं, फिर देखते हैं हमारे बच्चे को कौन खाना खिला चुका है, उसने खाया है नहीं खाया, फिर हम उठाते हो बेटा तुम यहाँ पर उठा के और लेके चलते हैं। तो तो ये सारी चीजें हैं। आपने जिक्र बाकी किया कभी, मैं तो ऐसी ऐसी फिर कहानियां खालिद साहब की, तो कि वो अक्सर होता था कि मुझे छोड़ के चले जाते थे, घर पहुंच के याद आता था कि मैं अपने बेटे को ऑफिस आ गया। तो बिल्कुल मेरे ऐसे ही, साथ बड़े हार्ड आ गया। वर्किंग, बड़े तरीके। अब नवाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रीनिच की हार्ट बीट कहते हैं, अकील भाई ग्रेट मैन। तो नवाज भाई के साथ बड़ी मेमोरीज सबकी हैं। आपकी कोई खास मेमोरीज पुराने वक्त की कोई अगर शेयर करें? ऐसा होता था कि ग्रीनिच में, मैं बात कर रहा हूँ फिर से वही 90s के एंड की, वहां से जब निकलना होता था, और ये वो जमाना है कि उस वक्त आपके पास आप इतने स्टेब्लिश नहीं होते हैं, अब स्ट्रगल का टाइम था हमारा भी। तो जी कन्वेंस आपको मिलती नहीं है, और मिल जाती है तो वो फिर बड़ा टाइम लगाती है, और फिर वहां से निकलना यूनिवर्सिटी से, वो एक, आई मीन ग्रेनेड इज इन द अनदर कॉर्नर ऑफ कराची, एंड आई यूज्ड टू लिव इन द अदर कॉर्नर ऑफ कराची। हाँ बैक इन 90s तो वो बिल्कुल ही अलग ही था, अब तो बिल्कुल आबाद हो बिल्कुल गया था, बट बिल्कुल। उस वक्त बिल्कुल और ही स्टार्ट। और और इसी तरह नवाज नवाज वाज एट द अदर कॉर्नर ऑफ द कराची। तो वो हम नवाज के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा कि नवाज को यूनिवर्सिटी से लेना, पिक करना, और हर रोज रात में इसको ड्रॉप करते हुए हम लोग जाते थे और साथ ही होते थे, और फिर वहां से हम मुख्तलिफ चीजें, अपनी बातें बातें शेयर करते हुए जा रहे होते थे। वो बड़ा मजा आता था नवाज के साथ, बहुत मजा आता तो सर इतना आपका अरसा गुजरा, इतने स्टूडेंट्स, इतनी चीजें और इतनी मेमोरीज, जैसे आप देख रहे हैं आपके स्टूडेंट्स भी कितने प्यारे भरे मैसेजेस कर रहे हैं। आपके कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स विद द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग क्लासेस अगर कोई आप शेयर करना चाहें? था। जरूर। अ, पहले एम्बेरसिंग मोमेंट शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद फनी मोमेंट शेयर बाद में शेयर करता हूँ। एम्बेरसिंग मोमेंट ये थी कि इट वाज माय फर्स्ट क्लास, एंड देयर वाज अ स्टूडेंट इन माय क्लास हु वाज सिटिंग इन फ्रंट, but he was constantly looking at the wall. Like I was just standing there and he was looking at there. His head was, focusing the wall. So I, while giving my lectures, I asked him, "Hello, may I have your eye contact?" He didn't listen to me. He's like looking at the wall constantly. And then I asked him again, and I asked him third time, and he was not listening. And then I got pissed off, and I was like, "Listen, I'm telling you to look at here, and you're constantly looking at the wall. What's written there?" So his friend who was sitting next to him, he told me, "Sir, he has eyesight problem." Kind of embarrassment I had at that time. He was semi-blind. It was the kind of disability that he had. So kind of embarrassment that I had, I can't tell you. But I went close to him. वो जो होना था वो हो गया. But I went close to him. I was like, "Listen, don't worry. I'll be with you. You'll find me very helpful. During the course, whenever you needed my help, you'll find me. So it's going to be there for you." अब यहाँ से क्लास में ये वाक़या हुआ, एंड देन मेरी आदत थी कि क्लास में मैं 1.5 आवर के बाद ब्रेक लिया करता था, एंड आफ्टर द ब्रेक आई यूज्ड टू मीट माय स्टूडेंट इन द कंप्यूटर लैब। और कंप्यूटर लैब में आपने देखा है कि एक ट्रांसपेरेंट पार्टीशन है। तो मैं इधर था और वो जो स्टूडेंट था वो दूसरे एंड पे था। आई रिमेंबर हिज नेम आल्सो, बट आई डोंट वांट टू कॉल द नेम ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा सही है। तो वो ही वाज सिटिंग एट द अदर साइड। तो मैंने देखा कि ही वाज यूजिंग फेसबुक एंड राइटिंग डाउन द पोस्ट, एंड आई गॉट शॉक्ड।
इन क्लास में इसको ये 6 फीट का आदमी नजर नहीं आ रहा है, आई मीन स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, और इसको यहाँ पर जो है ये बैठा पोस्ट दिख रहा है, क्या सीन है। थोड़ी देर तक तो आई वाज ट्राइंग टू ऑब्जर्व एंड मॉनिटर दीज थिंग्स। उसके बाद जब मैं देखा कि नहीं यार यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, इसके करीब जाना पड़ेगा, then I went closer to him. I was like, listen, what made it possible that that you were writing these posts on Facebook or in the class you were unable to see me? तो उसने एक डिवाइस यहाँ से निकाली, एक यहाँ से निकाली, तो कॉलर पे माइक भी था, सब कुछ था। मैं बात कर रहा हूँ काफी पहले की। आई मीन ऐसा अब होता है कि you have voice recognition software that you call out words and computer can type it out for you. और वो इतने एक्यूरेसी से टाइप अभी भी नहीं होते हैं। उसके दो रीजन है। नंबर वन, दैट वर्ड इज नॉट देयर इन द डिक्शनरी, और मे बी योर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट। ये दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से दोज वर्ड्स आर नॉट अंडरस्टूड बाय द मशीन। वो बंदा लिख रहा है और टाइप कर रहा है, उस वक्त उस जमाने में वाज यूजिंग दैट क्वालिटी डिवाइस। ही टोल्ड मी दैट माय डैड ब्रॉट दिस डिवाइस फॉर मी फ्रॉम यूके एंड ही वाज यूजिंग इट। बहरहाल वक्त गुजरता गया, मुझे ऐसे स्टूडेंट भी मिले जो 4 5 अटेम्प्ट्स कर चुके थे मेरे कोर्स में, बट दे वर फेलिंग कंटिन्यूअसली एंड दे वर अनेबल टू क्लियर द कोर्स। ये बंदा ब्लाइंड था और ये क्लास में आया है एंड ही गॉट एन ए इन द एंड। एंड आई रिमेंबर द डिस्कशन आई हैड विद मैडम सीमा मुगल, शी इज वेरी काइंड टू, कि उसके एग्जाम से पहले एक प्रॉब्लम आ गया कि अब ये लिखे कैसे, आईसाइट का मसला था। देन आई वेंट टू मैडम एंड आई took permission कि मैम आप ऐसा कर लें कि that you can make somebody responsible to sit during his exam, तो वहाँ पर कोई इन्विजिलेशन कर ले, then he'll be calling out words and others can write for him, तो ऐसा हो सकता है तो कर ले। और थैंक गॉड कि ऐसा हुआ and that student got an A, ended up you know with astonishing result in my course। बाकी ऐसे जो बेचारे स्टक हो गए, नो हर्ट फीलिंग, उनके लिए भी आई विल बी देयर टू हेल्प देम। तो मैं कोशिश करूँगा उनको क्लियर करा दूँ जब कभी दोबारा अगर इत्तेफाक होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। एक तो ये थी स्टोरी जो कि आपको इसमें आपको रिस्पेक्ट देनी देनी है हर एक को। यू नेवर नो दैट पीपल हु आर देयर इन योर क्लास दे हैव व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आई मीन आप उनसे बातचीत करें, उनके साथ बैठे, उनको समझें। Maybe you can be a problem solver for them. You can be a lifesaver for them. So try live your life for others also. That's what I Beautifully, mean. I mean, beautifully. do not make yourself confined to yourself only. आजकल तो मेरी गाड़ी, मैं, मेरे कपड़े, मेरा ब्रांड और ये सब चलता है। But अगर आप जॉब करते हैं, मल्टीपल जॉब्स करते हैं, तो I think the kind of amount you earn every month, you got to spare some amount for the families that deserve that amount. That Absolutely. amount, the money that you earn is not yours. Knowledge that you have is not yours. वो सब Beautiful. अल्लाह का आप पर करम है कि आपके पास ये तमाम चीज़ें हैं। तो आपको अगर अल्लाह ने इतना नवाजा है तो आई थिंक यू शुड शेयर दैट विद अदर्स आल्सो। भाई आपने इतनी प्यारी और बात की, और एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से हियर कि एक असली जो आपका रियल टीचर होता है, जो आपको न सिर्फ उस कोर्स से रिलेटेड सिखाए बल्कि जिंदगी के मामलात में और प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से चलना है, जब प्रॉब्लम्स आ जाएं तो किस तरह से आगे बढ़ना है, वो सिखा दें, तो वो एक स्टूडेंट के लिए फॉर लाइफ याद रहता है। और आप जितने मैसेजेस आ रहे हैं आपके स्टूडेंट्स की जानिब से, तो यही कि एक टीचर का बॉन्ड सिर्फ उस क्लास और उस कोर्स से रिलेटेड नहीं होता, बच्चे को समझना, उसकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक कि बच्चा इतना कंफर्टेबल अपने टीचर के साथ कि वो अपना कोई भी मसला आके शेयर कर ले टीचर के साथ, लुकिंग Yeah, अप टू देम। they do share their problems also। आई मीन ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि स्टूडेंट है वो हाईली सेंसिटिव है। आई मीन एक एडल्ट है आपकी क्लास में, व्हाई इज इट सो सेंसिटिव कि आप अगर जोर से बोल दें तो वो डर जाता है। तो क्लास में नहीं, फिर आई यूज्ड टू टॉक टू हिम सेपरेटली। पता किया तो उसके फादर जो है वो बाहर है, वो यहाँ रह रहे हैं और वो लुक आफ्टर कर रहे हैं उसकी फैमिली को, उसके चाचा वगैरह, और वो डिपेंड करता है कि किस तरह हैंडल कर रहे थे। So anyways, I spoke to his father and I told him, if you can, come back to Pakistan and give time to your children, I think that can save their career क्या and that बात would definitely help them. Imagine करेंगे उसके फादर आ गए, क्या सारे बात टीचर्स ने स्कूल में, सारे टीचर्स ने उस बच्चे को यू ग्रेड एक्सपेक्ट किया था, प्रिडिक्ट किया था। Nobody was willing to sign his a predicted report, grade report।
और उस वक्त प्रिंसिपल थे अलोयशियस, सेंट पैट्स में हुआ करते थे, आई डोंट नो वेयर इज ही नाउ. So I went to him. I was like, predicted grade in computers is A for this particular child. He got shocked. He's like, hello, come on. Every single teacher said that he is going to end up with a U. You are the only one. How would I send, this report to the director? He's like, मैंने कहा यार मुझे औरों का तो नहीं पता. मेरे कोर्स में ये बच्चे ने अच्छा परफॉर्म करना है मुझे पता है. And alhamdulillah, he ended up with flourishing result in the end. माशाल्लाह और वो बिल्कुल आज तक, and remember, he is the first one who wished me on my birthday. क्या बात He's the first one who wished me on every Eid also. I mean, क्या अब उसको मेरे ख्याल में मैंने कुछ ऐसा खास नहीं किया. मैंने तो सिर्फ काउंसलिंग की थी, 2-3 बातें की थी, उसके फादर को कन्विंस किया. मगर शायद मेरा कनेक्शन उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ लाइफ टाइम हो गया. Indeed, sir. It's the little things that touches the heart and it changes life. और एक उस्ताद का जो किरदार है एक स्टूडेंट की जिंदगी में वो बहुत गहरा है. जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू जस्ट द कोर्स दैट यू टीच, वो आप एक लाइफ का पार्ट बन जाते हैं. और आज जो बेतहाशा मैसेजेस हमने देखे आपके स्टूडेंट से, कोलीग से, तो वो जो मोहब्बत आपके साथ है इसी वजह से कि एक जहां आप अपने कोर्स के मास्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, वहीं पे जो आपका जो एक बॉन्ड बन जाता है इंसान के साथ वो इतना हसीन है कि उसको भी भुलाया नहीं जा सकता. तो हैट्स ऑफ टू दैट, सल्यूट टू यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एज वेल. फाद वकील हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी ये कहते हैं ग्रेट टीचर एंड गुड गाय. तो there's something that you've done over the years that everyone loves you so much. I would say thank you very much to everyone who is there watching me, and then who has been a part of my life at Greenwich. होता है at times, I mean, you are trying your best to give the best of you, but कहीं अगर कुछ गलती हो गई है तो forgive me for that. मैं क्या अपना पर्सनल मेरी एडवाइस सारे सारे लोगों को ये है जो मैं देना चाहूँगा कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन, कि अल्लाह ऐसा इल्म मुझे भी दे जो लोगों के लिए नफ़े वाला हो, फ़ायदे वाला हो, क्या बात और क्या बात. अमल वो हो जो साले हो, जो अच्छा हो. आई मीन आप डिसेंट अमल अगर करते हैं तो दैट्स फाइन, दैट्स फैंटास्टिक. एक फनी मूवमेंट भी थी क्लास में. आपने कहा था कि मूवमेंट शेयर करूं आपके साथ. तो ग्रीनिच में ऐसा होता है कि आपके पास फॉरेन स्टूडेंट्स भी बहुत आते हैं. अमन कोरियन भी आए, सीरियन भी आए, चाइनीज भी आया स्टूडेंट एक क्लास में. So there was a student in my class. It was the very first class, and I normally go for the introduction. मैं खुद introduction करता, and then you're asking everyone to introduce themselves. So when I ask him that, tell me about yourself, he's like, what is your name? When I ask him what is your name, he's like, John John John, and it went over from my head. And I was like, hello, excuse me, can you say that again forward? And he's like, John John John, and it again went over from my head. क्योंकि वो pure Chinese accent है, and they have problem in communicating in English. उनकी English slightly vague होती है, तो Chinese अब उसका वो accent था, तो वो दोबारा third time जब हुआ तो it was difficult for me to get what he was saying. So in the end, I said, oh, listen, or whatever you are, you stay back in class. You stay back in class. You stay back in class, and make sure that you come and meet me in the end. जब क्लास खत्म होती है उसको मैं बुलाता हूँ. I was like, write down your name on the board. So he wrote down his name, Joel, Jhol, Joel, Yong, 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 Chong, Chong, Chong. अब वो चाइनीज है. अब एक अरेबिक नाम होता है, कोई कितना भी तेजी से बोले उमर खान, तो पता है कि हाँ यार साउंड्स अरेबिक, तो मैं पता है कि यार हाँ ये नाम होता है. जों जों चोंग. अब मतलब ये जो नाम है डिफिकल्ट है, वाज डिफिकल्ट टू गेट व्हाट ही वाज सेइंग. सो या आई हैड टू पुट इन एफर्ट टू मेमोराइज हिज नेम, और ऐसा याद किया कि आज तक याद है. जी बिल्कुल, जोंग 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 मुझे भी याद हो और गया. और इससे ज्यादा ये था कि बेचारा बड़ा स्ट्रगल कर रहा था. ही वाज स्ट्रगलिंग इन एवरी सिंगल कोर्स. तो आके मुझे कहता है, सर, is it possible that you take my paper in Chinese language? नजर से दे तो देगा, पेपर चेक कौन करेगा. That's what I said. That yeah, fine, you can give your paper in Chinese language, but who's going to check your paper? तो फिर मैं मैडम के पास गया. मैडम भी बड़ा मुस्कुराई कि मैंने कहा मैडम आपने एडमिशन तो दिया है, आई थिंक चॉइस ऑफ कोर्स कुछ आगे पीछे करनी पड़ेगी. तो मैडम ने कहा अकील कुछ करते हैं.
तो ऐसा है कि फिर हमने प्लान किया चीज़ों को कुछ उस वक्त, और फिर बड़ा अच्छा वो एक्सपीरियंस था। बच्चे बड़े डिसिप्लिन थे। हमें कोरियन के साथ, चाइनीज़ के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, द अमेजिंग पीपल, वेरी स्वीट पीपल, और बड़े ज़बरदस्त हो गए। और अब तो हमें सर ग्रेनिच। ग्रेनेड में अब तो फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं। अब तो हमारे हाँ, पास बहुत डिफरेंट कंट्रीज और कल्चर्स से स्टूडेंट्स आ चुके हैं। इवन अब फॉरेन लैंग्वेजेस जो ग्रेनेड सिखा रहा है तो उसमें चाइनीज, मैंडेरिन, अरबिक, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, ये सारी लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं। तो मतलब अगर इंटरेस्ट हो रहा है तो आप चाइनीज में एनरोल कर सकते हैं अभी भी। yeah, I tried to learn Chinese using Google Translate and all that, but it is difficult. It is difficult. It requires a lot of time, but there is nothing difficult for a willing heart. But you need time to. Abhi pandemic mein to you have everyone has an opportunity to spend time and learn new things. तो सारे लोग कुछ पढ़ा भी रहे, कुछ पढ़ भी रहे. So I was in the same lane that I learned, and I did a couple of courses also during this time. So why not? We'll definitely come to Greenwich for learning new languages. And sir, as much as I'm loving the session, we're also coming towards an end. लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, कुछ आपकी यादें हैं, कुछ पिक्चर हैं, शेयर करना चाहेंगे। ग्रेनेड से आपका एक बड़ा डीप ताल्लुकात है। कॉन्वोकेशन होते हैं तो उसमें आपने मार्शल का भी रोल अदा किया है। आई शेयर दिस पिक्चर। इट्स अ वेक पिक्चर क्योंकि क्राउड से ली गई थी। तो आप मार्शल का रोल आपने अदा किया और लीड किया Yeah. स्टूडेंट्स को और सारे हमारे प्लेटफॉर्म पार्टी को। एक कॉन्वोकेशन का ग्रेनेड का वैसे ही एक अलग ही फील होती है, एक अलग ही हमारा सिनेरियो होता है कॉन्वोकेशन का। लीडिंग द कॉन्वोकेशन एज अ मार्शल, हाउ वाज द फीलिंग एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Big responsibility. I mean, you are leading the whole lot of the student to complete batch, and then people trusted you, believed in you, and you have to fulfill all the commitments, all the promises, and then you have to control your body language. There are many things, but hats off to Madam Seema Mughal and then the team of Greenwich University, that we practice a lot, and Madam Seema Mughal ensured, and that every individual trying his best to learn what is expected, and then in the end it went very successful. It was simultaneously, yeah, it was a proud feeling also. और वो जो रीटेक्स होते हैं प्रैक्टिस पे, तेज चलो, स्लो चलो, मत चलो, क्यों चलो, आगे का निकल गया, ये जो है ना, बिल्कुल ये सारी यादें हैं और हमेशा रहेंगी। अब एब्सोल्युटली है। जरूर। वही वाली उसके बात है बाद जो प्रैक्टिस। जबरदस्त खाना होता है, उसके बाद जो हाँ, जबरदस्त खाना होता है, हु कैन फॉरगेट दैट टू। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एंड वो वही वाली बात है कि परफेक्शन आती ही वही है जहां मतलब उस चीज को बिल्कुल, जब तक इट्स नॉट इन कार्व्ड इन योर ब्रेन, यू कीप रिपीटिंग एंड कीप गोइंग। तो शिफा लोधी हमारे साथ हैं, कहती उमर यू शुड हैव कॉल्ड सर अकील एंड सर समीर टुगेदर, देयर टीम। हमारी कोशिश यही थी। सर समीर वाजंट अवेलेबल, बट दिस इज ऑन माय बकेट लिस्ट, क्योंकि सर अकील और सर समीर साथ जो एक कॉम्बिनेशन हम सबको जीन है। हियर आई लाइक टू इंटरप्ट। वो सईद मुगल साहब तो हमेशा यही कहते हैं कि भाई ये दोनों कभी अलग नजर नहीं आते हैं, हर जगह साथ होते हैं। वी आर देयर टुगेदर इन द बिस्ट्रो, इन द मार्केट, इन द क्लासरूम, इन द लैब, एवरीवेयर। आई मीन, अब तो वो काइंड ऑफ फैमिली रिलेशन हो गया है, फैमिली रिलेशन हो सर तो कभी गया। ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं आप जा रहे हो किसी ने बोल दिया जोड़े के कैसे दिए? वही। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जोड़ी को पहचान जरूर लेते हैं। जोड़ी को एब्सोल्युटली। पहचान लेते हैं। जोड़ी बड़ी खुशी होती है अगर साथ होती है, And I लेकिन spoke and I spoke to Samir also before coming live for this particular session. I I spoke to you also that it would be better if we invite Samir also, and Samir wasn't available like you said, but Samir said yes to me. So you definitely keep a slot. हमें पता है एक तस्वीर तस्वीर रखनी चाहिए थी उनके साथ आज के शो में, तो मतलब एक गायबाना उनका इंट्रोडक्शन और इंक्लूजन होता। लेकिन आप लोगों को एज अ टीम ये एक शो उधार रहा, आप लोगों को साथ आना है इंशाल्लाह, क्योंकि हमने वो सेशन करना है। लेकिन सर एक चीज बताएं, ये सारी चीजें अपनी जगह, मतलब ये क्या सीन है? मतलब ये सांप को लटकाया हुआ है और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, ये मतलब ये क्या था? कहाँ ये देखिए, आइडिया, खतरों के खिलाड़ी, मतलब ये क्या कॉम्बिनेशन है? ये शायद मैंने स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा टफ सा कोई असाइनमेंट दे दिया होगा, and forcefully they took me there. It was a pet show at Greenwich University. So they took me there. Let's go, sir. Let's go, sir. And you got to hold this python in your head.
And I never did that before. I was like, no, please, thank you very much. I don't want to do it. He's like, yeah, कुछ कहता नहीं, आप होल्ड तो करें. तो आप देखें मैंने कितनी ग्रिप कितनी टाइट, अगर आप दोबारा उस पिक्चर को देखें. मैं वो देखता हूँ, मसला ये है कि वो मतलब आप आपके चेहरे की तरफ देख रहे हो और कह रहा है भाई मेरा क्या कसूर है यार, मेरा क्यों गला पकड़ रहे हैं? मुझे तो लगता है ये सांप मर गया होगा, बचा नहीं होगा, लेकिन पता नहीं. तो वो आसान नहीं था इसको होल्ड करना मेरे लिए. इट असद वाज उमर भी हमारे साथ हैं, एक और ग्रेनिच के अलमनाई, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इन्होंने टेबल टेनिस में. अब माशाल्लाह एक सक्सेसफुल फुटबॉल एकेडमी बच्चों की रन कर रहे हैं. तो वो भी कहते हैं जी ग्रेट टू सी सर अकील हेयर, वन ऑफ द बेस्ट. नासिर शेख भी हमारे साथ हैं, कहते हैं इट्स ग्रेट टू सी सर अकील, 8 long years, God bless you. So indeed sir, messages आते ही जा रहे हैं. The wonderful work that you've done over the years, it's all there right in front of you. I think that's an asset for me, kind of respect that I got from the Greenwich. And Greenwich was, everything for me. Greenwich is like a second home for me. It's like a soul connection with the Greenwich University. So it was like a family relationship with everyone. आप बात बिल्कुल. करें सईद साहब की, आप बात करें मुनीर साहब की, आप बात करें तारिक साहब की, आप किसी की भी बात करें. मुझे आई रिमेम्बर दिस कि व्हेनेवर आई गो टू ग्रीनिच, जी. गेट पे जब कार्ड दिखाना होता है, हम्म. वो गेट पर जो है जो गार्ड्स हैं, और वो अब जो सैफुर रहमान है, सैफुर रहमान भाई जमाने से देख रहे हैं. अब व्हेन आई वाज आई थिंक 20 इयर्स ओल्ड, उस टाइम से सैफुर रहमान साहब को वहाँ देख रहा हूँ. गेट से लेकर सईद साहब के रूम तक, अल्लाह का शुक्र है, everyone respect me a lot, everyone. And then people raise their hand when I enter the university, and that gives me a kind of immense feeling that yes, Aki, that's something that you have earned in 20 years. And then, when you work somewhere, you get this, you earn and you learn. That's another story. But the kind of respect and the relation connection that has established at Greenwich University, mind blowing, mind blowing. And because we of all the we all love you, we all love you so much, और इसका अंदाजा आपको हुआ होगा सारे कमेंट से. एंड नाउ कमिंग टू एन एंड, आपसे आखिरी के 2 सवाल मेरे रहेंगे. और पहला ये कि आपका आज ग्रेनिच लाइव सेशंस पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? wonderful, wonderful. I really want to be a part of this show again some other time. It's an amazing series of show or episodes that you're having, and I wait for this moment every day that Umar would come live and then would definitely come up with someone new, another personality chosen from the Greenwich University, and then I'll have an opportunity to see that particular candidate. सर मोहब्बत है आपकी. शिफा लोधी ने आज वो बड़ा एक आपका वाकया, व्हेन यू सिवियरली गॉट इंजर्ड और बर्न हो गया था और काफी प्रॉब्लम हुई थी, तो कहती हैं आई रिमेंबर द टाइम सर हैड दैट horrible accident and he had bandages on his hands, but he was such a trooper, he still came to university for teaching. So Yeah, hats off. I was holding the stick in my hand and then was going to different schools for conducting my classes in a regular way. So बिल्कुल ऐसा हुआ था. ये हुमायूं सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि जी ग्रेट टू सी सर अकील लाइव इन द शो, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पीपल आई केम अक्रॉस इन ग्रीनिच टाइम्स. तो भाई एक वो समाना सिटी का एक प्लॉट देते ना अकील भाई के, अभी तो एक प्लॉट सर अकील के नाम हो जाए. असद उमर के पास तो मेरे बच्चे जाते रहे माशाल्लाह, वो बड़ा अच्छा. लेकिन अभी पेंडेमिक में बड़ा मसला हो गया, तो फिर वी हैव टू कीप सोशल डिस्टेंसिंग. तो जान ही रुक गया है, मगर जो बात मैं कह नहीं सकता था वो आपने कह दी है. थैंक यू वेरी मच. नहीं सर, और मतलब इतना मजा आ रहा है, दिल नहीं चाह रहा सेशन एंड करने का, लेकिन विद वेरी हैवी हार्ट आई हैव टू एंड दिस. बट बिफोर वी लीव, आपके कोई एक मैसेज, कोई एक फीलिंग्स, वैसे दिस होल शो वाज फुल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस व्हेन इट कम्स टू ग्रीनिच, और क्या कहना चाहेंगे फॉर द एंटायर ग्रीनिच फैमिली? यार एक बात मजीद जाते जाते शेयर करूंगा. एक बहुत ही पायस किस्म के personality there. He came from Turkey, and I had an opportunity to talk to him, meet him. I asked him. I'm saying that he was a very pious man. So I asked him that, is there any lesson that you like to give it to me? Anything that you want me to remember that can help me on the day of resurrection? So he said, remember Muhammad.
Muhammad will not forget you. क्या बात। तो एंड यही है कि जिसकी फजीलत में दो आलम की जमी है, सजदा करे कौनैन वो तेवा की दमी है, औरों का अकीदा है अपना भी यकीन है, जो शह है मदीने में कहीं और नहीं है, वो अर्ज़ मुक़द्दस है मेरे आका की ज़मी है, अरे जन्नत भी वही है और मालिक जन्नत भी वही है. लाइक टू डेडिकेट दिस टू द ग्रेनिच फैमिली, स्पेशली मैडम सीमा मुगल. वो भी बड़े आशिकाने रसूल की लिस्ट में आती हैं, और उन्होंने और कामरान ने मिलकर मिलादों की महफिल सजाई ग्रेनिच में, और बड़ा अच्छा रहा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था. बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल शेयरिंग सर। और आपके मैसेजेस स्टूडेंट्स के आते ही जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी सेशन क्लोज नहीं करना है. बिफोर यू क्लोज द सेशन, वी आर ऑल थैंकफुल टू सर अकील for his role in teaching us and shaping our personalities. He is indeed an asset for Greenwich. Indeed, sir, we all love you from the bottom of our heart. आप उस्ताद हैं, हमेशा उस्ताद रहेंगे, और अल्लाह हमारे इस रिलेशन को हमेशा कायम रखे. Whenever this COVID gets done, आप आए, let's have a reunion together. थोड़ी क्रिकेट भी वापस से खेलते हैं, थोड़ी चीजें भी, मेमोरीज भी, and definitely see you again. So thank you so much for your time, sir. Stay blessed, keep smiling, stay safe, and keep doing the wonderful things that you're doing over the years, and keep changing lives. Thank you very much. So nice of you. I'm very thankful to the entire team of Greenwich University. Thank you so much, sir. Stay safe. Allah Hafiz. So, guys, सुना आपने मिस्टर अकील अहमद को, और वो सारी मेमोरीज जो आपने सुना कि 1996 से सिलसिला चला आ रहा है. कितने स्टूडेंट्स, कितनी क्लासेस, कितने चेंजेस ग्रेनिच के सर अकील ने हमारे साथ साथ देखे. एंड जिस तरह आपने देखा कि सारे मैसेजेस देखे, सारे स्टूडेंट्स आए, हमारे ग्रेनिच के फैमिली मेम्बर्स आए, हमारे उनके colleagues आए, the bond is there, and that's the best thing in life, कि आप जहाँ काम करें या आप जहाँ भी आपका जिसके साथ रहे, चाहे वो पढ़ाई में रहे, काम में रहे, कोई भी ताल्लुक जब साथ रहे, जब आप साथ नहीं होते और वो ताल्लुक खत्म हो जाता है, उस टाइम के हिसाब से मोहब्बत वहीं रहती है, रिस्पेक्ट वहीं रहती है. एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट thing that you can never earn in life, and that is love and respect from people. And Sir Aqeel is one of those brilliant teachers जो हमारे दिल में बसे हुए हैं, and that's all because of the brilliant things that he has been doing over the years. आपने सुना कितने as a human being is so humble, so kind, so special, always thinking about his students, always trying to help them out of the way. And we all are in depth of Sir Aqeel for the brilliant things that he has taught us over the years. तो ये था हमारा आज का सेशन. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया और बहुत सी मेमोरीज याद आई हो. आईटी के बहुत से बच्चे मैं जानता हूँ फेल हुए हैं, वो बता नहीं रहे होंगे कमेंट्स में, लेकिन बड़े लोगों का सेकंड टेक, थर्ड टेक हुआ है. बहुत से लोग थे फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गए, मैं उन लकी लोगों में से था, फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया था. बट देन अगेन वी ऑल लव सर अकील एंड सर समीर लखानी for teaching us IT, और एक brilliant memories ग्रेनिच के साथ रही. This was all for today's session. कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे एक और सेशन के साथ, और कल एक और सरप्राइज है मेरे पास. कल के लिए कह सकते हैं स्मॉल डायनामाइट है. वो स्मॉल डायनामाइट कौन है वो आपको कल 10 बजे पता चलेगा, क्योंकि एक हिंट दे देता हूँ, अवार्ड विनिंग चाइल्ड एक्टर हैं पाकिस्तान के, और वो कल हमारे शो का पार्ट होंगे. वो कौन है, नाम और शक्ल रिवील होगी कल 10 बजे इंशाल्लाह. तो आपने बिल्कुल कल ज्वाइन करना है. फीडबैक आप दे सकते हैं कमेंट्स में, एंड यू बिल्कुल आप बता सकते हैं कि आप फ्यूचर में किनको लाइव सेशन में देखना चाह रहे हैं, और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम लाइव सेशन करें. और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं फॉल सेमेस्टर के एडमिशन जारी हैं. www.greenwich.edu.pk पे आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं. For queries, you can contact on our WhatsApp number right there on your screen, 0306 224 8363, and our email is admissions@greenwich.edu.pk. तो उमर खान को दीजिए इजाजत, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. Till then, stay safe, keep smiling, stay positive, and Pakistan Zindabad.